Hello friends, welcome to Engineering Math Studio by Subs Academy. I am Professor Shukla. Having more than 25 plus years of teaching experience in engineering students, I taught more than 20,000 students from last 25 years. So दोस्तों, आज हम लोग लेके आए इंजीनियरिंग मैथ्स 3 न्यू सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स 3 ऑन द डिमांड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. सो नाउ आज हमारा लेक्चर है सेकंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा व्हाट यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. नाउ इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं. इसमें एक कंसेप्ट दोस्तों YC नाम का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे हम लोगों ने कल देखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हाउ मेनी केसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. So there are 4 cases. So case number 1 is what? Roots are real and non-repeated. Case number 2, roots are real and repeated. Case number 3, roots are complex and non-repeated. And case number 4 is what? Roots are complex and repeated. So आज हम लोग देखने वाले हैं problems on complementary function. Problems on complementary function. How to find the complementary function. So for example, suppose d square y upon dx square plus 5 divided by dx plus 6y equal to 0. 6y equal to 0. So my first step is what? You put the value capital D, operator D equal to what? D by dx. Instead of d by dx, you put capital D. So here, d square y plus 5 dy plus 6y equal to 0. यहाँ से कॉमन क्या आएगा? So d square plus 5d plus 6 into y equal to 0. Clear? So हमारी स्टेप क्या थी? Auxiliary equation f of d equal to 0. So my f of d is what? D square plus 5d plus 6 equal to 0. Now by using calcing and without calcing, we can solve this differential equation. We find out the roots of this equation by using calcing without calcing. Suppose without calcing, here suppose roots of this constant term 6, हमें रूट्स कैसे निकालना है? d square plus 5d plus 6. यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 6, इसके ऐसे दो रूट्स निकालो जिनकी एडिशन, जिनका सम मिडिल टर्म होनी चाहिए. ये विदाउट कैंसिल मिडिल टर्म होनी चाहिए. सो ये 6 क्या होगा फिर? 2 into 3 that is 6. 2 plus 3 that is 5. Means what? We have two roots, that is d plus 2 and d plus 3 equal to 0. So d equal to what? Minus 2 minus 3. Okay? So here two roots are there, minus 2 and minus 3. It means what? These roots are real and non-repeated. Roots are real and non-repeated. So your complementary function is yc equal to c1 e raised to minus 2x c2 e raised to minus 3x. This is the solution of complementary function. Clear? Got my point? It means what? When you find the roots of this equation, d square ऑर्डर 2 है तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, 3 है तो 3 रूट्स, 4 है तो 4 रूट्स. सो d square plus 5d plus 6, इसके रूट्स क्या है? -2 and -3. It means what? These roots are real and non-repeated. So your complementary function is what? c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus 3x. Now अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन.
Find complementary function. Find complementary function. D square y upon dx square minus 5 divided by dx 6y equal to 0. पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 6y. नाउ हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं. सो क्या होगा, माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, पुट कैपिटल D इक्वल टू d by dx. Clear? So now instead of d by dx we put capital D. So here we write d square y minus 5 dy minus 6y equal to 0. Here y is common, so d square 5d minus 6y equal to 0. So our first step is what, by using auxiliary equation f of d equal to 0. So therefore d square minus 5d minus 6 equal to 0. अब क्या करना है हमें, ये जो 6 दिया हुआ है माइनस 6 है, तो माइनस 6 के ऐसे दो रूट्स निकालो कि जिनके एडिशन मिडल टर्म आनी चाहिए. ये माइनस 6 के ऐसे दो रूट्स निकालो कि जिनकी एडिशन मिडल टर्म आनी चाहिए. इट मीन्स व्हाट, सपोज वी राइट योर माइनस 6 into 1, दैट इज योर माइनस 6, एंड माइनस 6 plus 1 means what, your minus 5. Right? So d square minus 5d minus 6, so roots is what, your minus 6 plus 1. So it means what, d minus 6 d plus 1 equal to 0. So roots of d minus 6 equal to 0 and d plus 1 equal to 0. So d equal to 6 and d equal to minus 1. These two roots are there, d equal to 6 and d equal to minus 1. So my case number is what, again case number 1. Roots are real and non-repeated. Roots are real and non-repeated. So your complementary function is yc equal to c1 e raised to 6x plus c2 e raised to minus 1x. This is the solution of complementary function. Clear my mind? एक बार फिर से बोलता हूँ, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5 डी अपॉन डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0. हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल D इक्वल टू व्हाट है, d by dx. So instead of d by dx we put capital D. So here we write d square y minus 5 dy minus 6y equal to 0. Right? यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा y, बचता क्या फिर d square minus 5d minus 6. So by using our equation number 2 in lecture number 1, that is f of dy equal to f of x. So here we put f of d equal to 0. It means what is this value equal to 0. तो हमें रूट्स कैसे निकालना है, तो आप यहाँ से माइनस 6 के ऐसे वैल्यू निकालो जिनकी मिडिल टर्म क्या आनी चाहिए, समेशन, मल्टीप्लिकेशन हो जाए लास्ट टर्म. ये आपका रूट्स हो गया माइनस 6 plus 1. So 6 and minus 1, these two roots are there. Roots are real and non-repeated. So complementary function is c1 e raised to 6x plus c2 e raised to minus 1x. क्लियर? ये हम लोग निकाला मैन्युअली. अब सपोज अगर हमें कैल्सी निकालना है, तो लोग क्या करोगे, कैल्सी में क्या करना है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है. हमें इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा सोल्यूशन है. वहां पे ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू माइनस 6, सी की वैल्यू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 5, सी की वैल्यू माइनस 6. हमारा रूट्स क्या आएगा 6 एंड माइनस 1. बाय यूजिंग कैल्सी हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. क्लियर माय पॉइंट? ओके, नाउ हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3. नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सपोज d square y upon dx square 4 dy by dx plus 4y equal to 0. 4y equal to 0. सेम स्टेप, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जब भी हम लोग को dy by dx दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑपरेटर d equal to d by dx. So instead of d by dx we put capital D.
So write d square y 4 dy plus 4y equal to 0. राइट, अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा y, सो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0. So my first step is what? Auxiliary equation f of d equal to 0. So here f of d is what? D square plus 4d plus 4. D square plus 4d plus 4. राइट, सो अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? 4. इस 4 के ऐसे रूट्स निकालो जिनकी एडिशन मिडिल टर्म चाहिए. So 2 into 2 that is 4, and addition of 2 plus 2 what? That is also 4, right? So d plus 2 equal to what? 0. So my roots is what? D equal to minus 2 minus 2. D plus 2 equal to 0, D plus 2 equal to 0, so D equal to what here? Minus 2, D equal to what here? Minus 2. So D equal to what? Minus 2 and minus 2. अब यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड repeated. So here my roots are real and repeated. So complementary function is yc equal to c1 plus c2x e raised to minus 2x. This is my case number 2. This is my case number 2. What is case number 2? Roots are real and repeated. अगर real repeated है तो हमारा फार्मूला क्या है? c1 plus c2x e raised to m1x. Here two roots are repeated, so we write here c1 plus c2x e raised to minus 2x. Clear? Got my point? This is your problem number 3. Okay. Problem number 4. Find complementary function. Find here 2d square y upon dx square minus dy by dx minus 10y equal to 0. सेम प्रॉब्लम. हमारी पहली स्टेप क्या होगी? पुट कैपिटल D इक्वल टू व्हाट? D by dx. कैपिटल D इक्वल टू D by dx. So we write here 2d square y minus dy minus 10y equal to 0. So here 2d square minus d minus 10, y is common for. So here auxiliary equation f of d equal to 0. So this function is what here? 2d square minus d minus 10 equal to 0. Right? Now find the roots of this 2d square minus d minus 10. अब तक हम लोगों ने क्या किया? d square का कोएफिशिएंट 1 था तो हमने डायरेक्ट रूट्स निकाले. अब d square का कोएफिशिएंट 2 है. बाय यूजिंग कैल से हम लोग डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं. बट विदाउट कैल से अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 10 इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ d स्क्वायर 2 मींस व्हाट? माइनस 20. अब इस माइनस 20 के ऐसे रूट्स निकालो दो जिनके एडिशन आना चाहिए माइनस 1 मिडिल टर्म. सो दैट माइनस 5 इंटू 4 दैट इज माइनस 20 minus 5 plus 4 that is a minus 1. So here two roots are which? minus 5 and plus 4. ये रूट्स कौन से है? minus 20 के. बट हमारे पास है, हमारे पास क्या है? minus 10. So we write here 2d square minus 5d plus 4d minus 10 equal to 0. Right? Now group of two parts. So here common is d, 2d minus 5. Again we common here 2, remaining term is 2d minus 5 equal to 0. So d plus 2 and 2d minus 5 equal to, so therefore d equal to minus 2, 2d minus 5 equal to 0, so 2d equal to 5. So d equal to minus 2 and d equal to 5 by 2. My roots are d equal to minus 2 and d equal to 5 by 2. So these roots are again
real and non-repeated. So complementary function is c1 e raised to minus 2x, c2 e raised to 5 by 2x, 5 by 2x. This is your complementary function. क्लियर? इट मीन्स व्हाट, जब भी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो जो चार केस हम लोगों ने पढ़ी है, पहली केस कौन सी थी? रूट्स आर रियल नॉन रिपीटेड, रूट्स आर रियल रिपीटेड, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड एंड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रिपीटेड। इन चारों में से कोई भी एक टर्म यहाँ पे आएगी और हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। क्लियर माय पॉइंट? दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4, find complementary function. Find here 2d square y upon dx square minus dy by dx minus 10y equal to 0. सेम प्रॉब्लम। हमारी पहली स्टेप क्या होगी? पुट कैपिटल D इक्वल टू व्हाट? d by dx। कैपिटल D इक्वल टू d by dx। So we write here 2d square y minus dy minus 10y equal to 0. So here 2d square minus d minus 10, y is common for. So here auxiliary equation f of d equal to 0. So this function is what here 2d square minus d minus 10 equal to 0. Right? Now find the roots of this 2d square minus d minus 10. अब तक हम लोगों ने क्या किया? d square का कोएफिशिएंट 1 था तो हमने डायरेक्ट रूट्स निकाले। अब d square का कोएफिशिएंट 2 है, बाय यूजिंग कैल से हम लोग डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं, बट विदाउट कैल से अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 10 इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ d square 2 मींस व्हाट? माइनस 20। अब इस माइनस 20 के ऐसे रूट्स निकालो दो, जिनके एडिशन आना चाहिए -1 मिडिल टर्म। सो दैट -5 into 4 that is -20, -5 plus 4 that is -1. So here two roots are which -5 and +4। ये रूट्स कौन से है? -20 के। बट हमारे पास क्या है? -10। So we write here 2d square minus 5d plus 4d minus 10 equal to 0. Right? Now group of two parts. So here common is d, 2d minus 5. Again we common here 2, remaining term is 2d minus 5 equal to 0. So d plus 2 and 2d minus 5 equal to, so therefore d equal to -2, 2d minus 5 equal to 0, so 2d equal to 5. So d equal to -2 and d equal to 5 by 2. My roots are d equal to -2 and d equal to 5 by 2. So these roots are again real and non-repeated. So complementary function is c1 e raised to minus 2x, c2 e raised to 5 by 2x, 5 by 2x. This is your complementary function. क्लियर? इट मीन्स व्हाट, जब भी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो जो चार केस हम लोगों ने पढ़ी है, पहली केस कौन सी थी? रूट्स आर रियल नॉन रिपीटेड, रूट्स आर रियल रिपीटेड, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड एंड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रिपीटेड। इन चारों में से कोई भी एक टर्म यहाँ पे आएगी और हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। क्लियर माय पॉइंट? दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 5। So now we write directly d square plus 3d plus 3y equal to 0. d square plus 3d plus 3 into y equal to 0. So function that in terms of d में है, capital D, that is your operator. So now need to put d by dx, right? So directly auxiliary equation
equation f of d equal to 0. So this value d square plus 3d plus 3 equal to 0. अब देखो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें जो बोल रहा हूँ मैन्युअली हम लोग निकाल रहे हैं। बाय कैलसी हम लोग जब पी आई निकालेंगे तब मैं डायरेक्ट आपको कैलसी कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, राइट। अब हम लोग निकालेंगे मैन्युअली, हमें ये भी आना चाहिए। विदाउट कैलसी अगर हमारे पास कैलसी नहीं है, विदाउट कैलसी हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो भी आना चाहिए हम लोग को। सो हियर देखो अब यहाँ पे 3 के ऐसे दो रूट्स निकालो जिनके एडिशन 3 आनी चाहिए, जिनके एडिशन 3 आनी चाहिए। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग 3 के दो रूट्स निकालते हैं तो क्या होगा, 3 into 1 दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। हमें क्या चाहिए 3, राइट। हमें चाहिए 3, कितना मिला 4। ये रूट्स हमारे पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज हम लोग अलग से रूट निकालते हैं, 2 into 1 कितना होता है 2, 2 plus 1 कितना होता है 3। मिडल टर्म मिल रहे पर ये टर्म नहीं मिल रहे हम लोगों को, राइट। सो इट मीन्स व्हाट, जब पे हमारे ऑर्डर 2 है और हमारे रूट्स नहीं निकल रहे तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, using quadratic equation. So this equation in terms of ax square plus bx plus c equal to 0. So हमारी वैल्यू क्या होती है, d equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Clear? So your value of a equal to what, 1, b equal to 3, c equal to again 3. A, B and C, value of A equal to 1, B equal to 3, C equal to 3. So therefore D equal to minus B means minus 3 plus minus under root of B square means what here 3 square 4 into 1 into 3 upon 2 into 1. Clear? So we write here D equal to minus 3 plus minus under root of 9 minus 12 upon 2. 3 square is 9, 4 into 1 into 3 that is 12. So minus 3 plus minus root of 9 minus 12 by 2. So this value is minus 3 plus minus root 3 by 2. So we write here D equal to minus 3 by 2 plus minus root 3 by 2 into I. Root minus 1 means what your I? So it is root 3 by 2 I. तो ये हमारा रूट कौन सा है फिर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, here combination of real plus imaginary part, so that is root is complex and non-repeated. So complementary function is yc equal to, what is the value of alpha? So this value is for alpha and this value is for beta. So e raised to alpha x means minus 3 by 2x, c1 cos of beta x means what here, root 3 by 2x plus c2 sin of root 3 by 2x. For complex root हम लोग क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, यूजिंग y is equal to e raised to alpha x, c1 cos of beta x, c2 sin of beta x, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है मेन। अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कौन सी है, माइनस 3 by 2, बीटा की वैल्यू है रूट 3 by 2, सो वी राइट e raised to minus 3 by 2x, c1 cos root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x. This is your complementary function. Now we find the value of yc. Clear my point? Okay. Next problem. Problem number 6. D minus 1 bracket square d square plus 1y equal to 0. Right? D minus 1 bracket square d square plus 1y equal to 0. So my first step is what? Auxiliary equation f of d equal to 0. Auxiliary equation f of d equal to 0.
So my term is what? D minus 1 square d square plus 1 equal to what? 0. D minus 1 brackets there. It means what? We write the value d minus 1 two times. Again d square plus 1 equal to 0. Means what? D minus 1 equal to 0, d minus 1 equal to 0 and d square plus 1 equal to what? 0. So value of d equal to plus 1, d equal to plus 1. And here d square equal to minus 1. It means what? Your roots is d equal to 1, 1. Here two roots are real and repeated. Two roots are real and repeated, but here d equal to value is minus 1. It means what? Plus minus 1i. That is imaginary roots. So plus minus 1i means what? Here d equal to 0 plus minus 1i. 0 plus minus 1i. It means what? Your root d equal to 1, 1 and d equal to 0 plus minus 1i. So combination is what? Two roots are real and repeated and complex root. Two roots are real and repeated and one root is complex. So here complementary function is yc equal to c1 plus c2x e raised to 1x. Plus now complex roots. So your value of alpha is what? 0 and beta is what? Here 1. Root is complex. So value of alpha is 0, value of beta is 1. Clear? Now here c1 plus c2 two arbitrary constants. So next one is what? E raised to 0x into two arbitrary constants c1 and c2. So third arbitrary constant is c3. So here c3 cos of 1x, c4 sin of 1x. Right? It means what? Value of a raised to 0 is 1. So yc equal to c1 plus c2x plus c3 cos x plus c4 sin x. This is the value of yc. This is the value of yc. Clear my point? What is my point? If any doubts? So here two roots are real and repeated and complex. Clear? Okay. Now next problem for complementary function. D square minus 6d plus 4 into I equal to 0. D square minus 6d plus 4 into y equal to 0. Now friends, my first step is what? Auxiliary equation f of d equal to 0. अब यहाँ पे f of d क्या है हमारा? D square minus 6d plus 4 equal to 0. This is a quadratic equation. अब यहाँ पे 4 के ऐसे रूट्स निकालो जिनके एडिशन -6 होनी चाहिए, मिडिल टर्म आने वाले नहीं है. तो हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू व्हाट? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब ये प्रॉब्लम हम लोग डायरेक्ट कैलसी से निकालेंगे. जैसे हम लोग कैलसी उठाते हैं क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन में जाएंगे. इक्वेशन राइट. जैसे इक्वेशन में जाते हैं हमारे पास क्या आता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इक्वेशन है देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. राइट. अब इस इक्वेशन में हमारी a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू है हमारी 4. a b एंड c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 4. सो बाय यूजिंग कैलसी हम लोग डायरेक्ट कैलसी से निकालेंगे आज. बाय यूजिंग कैलसी हमारे रूट्स आने वाले हैं d इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5. 3 प्लस माइनस रूट 5. अब जैसे हमारा रूट 3 प्लस माइनस रूट 5 है, बच्चों के दिमाग में क्या होता है? जैसे प्लस माइनस रूट आया इट मीन्स व्हाट? योर इमेजिनरी.
पर यहाँ पे आई है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे आई नहीं है इट मीन्स व्हाट, इसका रूट्स कौन सा है? रियल एंड नॉन रिपीटेड. So it means what, this value is d equal to 3 plus root 5 and 3 minus root 5. So these roots are real and non-repeated. So my complementary function is yc equal to c1 e raised to m1 की वैल्यू क्या होगी? 3 plus root 5x plus c2 e raised to 3 minus root 5x. So my complementary function is yc equal to c1 e raised to the power 3 plus root 5x plus c2 e raised to power 3 minus root 5x. इट मीन्स वर्ड, यहाँ पे अगर हमारा आई आता तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट होता. बट यहाँ पे आई नहीं आता है तो क्या होगा? 3 प्लस माइनस रूट 5 मीन्स वर्ड रूट्स आर रियल एंड नॉन रिपीटेड. क्लियर माय पॉइंट? व्हाट इज माय पॉइंट फ्रेंड्स? देखो हम लोगों ने आज पूरा ये लेक्चर को देखा है, सिर्फ हमने क्या फाइंड किया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय यूजिंग दैट 4 केसेस. कौन कौन सी केस है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. केस नंबर 1 जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? रूट्स आर रियल एंड नॉन रिपीटेड. केस नंबर 2 क्या होती है? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड. केस नंबर 3 होती है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड. एंड केस नंबर 4 होती है हमारी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड. अब इन 4 केसेस में हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हमारे हर प्रॉब्लम में हमें पहली स्टेप जो है हमारी, हम टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इट मीन्स व्हाट, जब भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है सॉल्व, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट मीन्स व्हाट, हम लोग निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन. सो जनरल सॉल्यूशन इज फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस टू कंपोनेंट्स CF plus PI. राइट, CF plus PI. CF मीन्स व्हाट, ये हमारी पहली टर्म जो है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं CF को YC, डिनोट एज अ YC. सो फर्स्ट हमें YC निकालना है, उसके बाद में क्या निकालना है? YP. गॉट माय पॉइंट? तो फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा बाय यूजिंग ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक्स ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन. लेक्चर नंबर 2 है हमारा फाइंड CF, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ इन लेक्चर नंबर 3 हम लोग फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल? व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर इंटीग्रल? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर? सो हम लोग ये सब बारे देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में. ओके दोस्तों, देखो इंजीनियरिंग मैथ्स स्टूडियो आपके लिए लेकर आया है ये सारे इंजीनियरिंग मैथ्स की सीरीज. पहले इंजीनियरिंग मैथ्स रहेगा, फिर मैथ्स 2, मैथ्स 1, मैकेनिक्स, नंबर ऑफ सीरीज आने वाली है. सिर्फ आपका काम क्या है? हमें मोटिवेशन देना. कैसे मिलेगा? यस कैसे मिलेगा? आपको पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है. तो हमारा ये जो इंजीनियरिंग मैथ्स स्टूडियो है, इस मैथ स्टूडियो में हम लोग इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इतना डाउट सॉल्व करने वाला है. आपके मन में जो भी डाउट्स होगा, जो भी कुछ होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो. और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज योर लेक्चर नंबर 3. क्लियर माय पॉइंट? सो नाउ सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस. अगर आपको बेसिक से हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आपको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. ओके दोस्तों, ओके, बाय बाय.